तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आउटलायर एनालिसिस ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या करना है, चेक द आउटलायर इन ऑल द वेरिएबल एंड ट्रीट दैम यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो हमें सारे वेरिएबल्स में से हमें आउटलायर चेक करना है एंड उसको एप्रोप्रिएट टेक्निक से ट्रीट करनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। देन वी हैव टू डू पास द विथ एंड हाइट ऑफ द फिक्स साइज़। जो भी जिस साइज़ का भी हमें फिगर चाहिए उसका विथ और हाइट पास करनी होगी। तो सपोज़ हमें 15/8 फिगर चाहिए, साइज चाहिए। 15 हमारा उसका लेंथ हो और 8 उसका विथ हो। तो plt डॉट फिगर और उसमें हम फिक्स साइज़ पास करेंगे। फिक्स साइज़ इक्वल टू 15/8। देन df compensation is the data set what we have. then df compensation dot box plot। तो अब उसका बॉक्स प्लॉट करेंगे क्योंकि हमें आउटलायर्स को विजुअलाइज करने के लिए हमें बॉक्स प्लॉट करनी पड़ती है। प्लॉट द बॉक्स प्लॉट टू विजुअलाइज द आउटलायर इन ऑल द न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ओनली फॉर द न्यूमेरिक, नॉट फॉर द कैटेगरिकल वेरिएबल। नाउ वी हैव टू सेट द प्लॉट लेवल। सो व्हाट विल बी द प्लॉट लेवल? सो हमें बोल रहे हैं it's like distribution of all the numeric variables. Yes, it's a distribution of all the numeric variables. So inside plt dot title will pass distribution of all the numeric variable and will give font size equal to 15. So xtick returns the x-axis ticks. So xtick क्या करता है, x-axis में टिक रिटर्न करता है। तो अगर आप फिगर से देखोगे तो एक्स एक्सिस में ये टिक रिटर्न करता है, ठीक है। तो रिटर्न्स द एक्स एक्सिस एक्स टिक एंड रोटेशन। सो हाउ रोटेशन वर्टिकल मीन्स rotate the x-axis level vertically. So we have to rotate the x-axis level vertically. And what will be the font size of x-axis level? That is 15, what we have specified over here. And then plt dot show, this will return this one. So now we have noticed that salary and total salary. So this is a salaries column, this is the total salary column, and total compensation have a quite large as compared to other variables. तो हम दूसरे वेरिएबल्स का देखेंगे तो वो छोटा छोटा है, यहीं तक है, और ये बहुत बड़ा है। आउटलायर्स इसके बहुत बड़े रेंज में है। So we plot the box plot of independent variables again by not considering the variables salaries, total salary and total compensation. तो हम क्या करेंगे, सैलरीज, टोटल सैलरी एंड टोटल कंपनसेशन को कंसिडर नहीं करते हुए हम इसको बॉक्स प्लॉट करेंगे। तो सैलरीज, टोटल सैलरीज एंड टोटल कंपनसेशन, दीज सैलरीज, टोटल सैलरी एंड टोटल कंपनसेशन हमें प्लॉट नहीं करना है। और हम बाकी और हमें पता चलता है इस फिगर से दैट द वेरिएबल हेल्थ डेंटल हैज़ नो आउटलायर्स। सो इफ विल सी नाउ इन दिस वन हेल्थ डेंटल, तो इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है, हैज़ नो आउटलायर्स। सो इसको हमें ट्रीट करना ही नहीं है। तो नाउ बॉक्स प्लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके बॉक्स प्लॉट करेंगे एंड प्लॉट फिक्स साइज 15 और 8, और फिगर का साइज़ क्या होगा 15 and 8, एंड df कंपनसेशन डॉट लोकेशन। तो plot the box plot of all the numeric variables except the salaries, total salary and total compensation। तो ये सब को छोड़ के बाकी जो भी बचता है
उसको हम बॉक्स प्लॉट करेंगे। और लोकेशन एक एरे है जो सेलेक्ट करता है वेरिएबल्स को। तो हमें कॉलम्स नेम्स जिसको प्लॉट करने हैं वो ओवर टाइम, अदर सैलरी, रिटायरमेंट, अदर बेनिफिट्स एंड टोटल बेनिफिट्स डॉट बॉक्स प्लॉट. So this will box plot all the arrays of the columns which we have passed. Then we'll give the name as distribution of independent variables. So these are not the dependent, these are independent variables, and font size is 15, rotation is vertical. Shift enter. So we'll see over time. Now for the small range, over time, other salaries, retirements, other benefits and total benefits. So now we can see clearly, plot clearly what is the range of that. Now total compensation, हमारा target क्या है? What is the total compensation what we are getting? So set the plot size using fixed size. So fixed size equal to 15 by 8, and then pass the width to the fixed size. Then we have to box plot. So cboard has library that sns dot box plot, and pass the array. So df compensation, total compensation, and plot title, distribution of target variable, and total compensation. Font size is 15. plt dot show command. So when we'll hit enter, shift and enter, we'll see. So from the above plot we notice that all variables have upper extreme or below the lower extreme. These points are in outlier in the data. However, the exact location of these points is not precisely seen. So from the above plot we notice that all the variables have point above the upper extreme. So this is the upper extreme, so it's not here, it's above the upper extreme, and below the lower extreme these points are outlier. However, the exact location of point is not precisely seen. So अगर ये precisely दिखा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें IQR method use करना है. Let us use the IQR method to remove the outliers. So we'll use the IQR methods to remove the outliers. So first, for the IQR you have to select all, include what is a number. We should not take categorical. So Q1 means numeric df compensation dot quantile 0.25. Q3 numeric df compensation dot quantile, that is 0.75. IQR minus Q3 minus Q1, so that we'll get is the IQR value. Now numeric df compensation. So अब हमें क्या लेना है, retrieve the data frame without the outliers. So we have to take the data frame which is not having outliers, and negative returns the value that do not satisfy this condition. और ये negative return करेगा जो ये condition satisfy नहीं करे. तो numeric df compensation is smaller than Q1 minus 1.5 into IQR, or numeric df compensation is greater than Q3 plus 1.5 into IQR, any axis equal to 1. So any axis equal to 1 means it will check all the entire row at least one true entries. This row represents outlier in the data. Wherever true entry is there, it will check all the rows and it will return that. Check for shape of the data. Now when we'll run, we'll get the shape of the data. So as you can see now 3, 7, 3, 7, 7, 2, 1 and 10. Now numeric df compensation head. So you will get these 5 rows
of numeric DF composition. A crude way to know whether outlier have been removed is not check the dimension of the data. From the above output, we can see dimensions are reduced. So now dimensions are reduced, and it implies that outliers are removed. So before it was 5000 something, now it is 3721. So this implies that outliers are removed from the data. So this is the outlier analysis treatment. Now we'll go ahead and we'll discuss about missing value analysis treatment. So first we have to check whether the presence of missing value in the data are there and treat them. If it is there, so take that and then we have to treat. So for checking the missing value, we use the is null, whether the null value is present. If it is present, take the sum of it and sort the value ascending order, and then new percentage. So we'll divide and we'll take out the percentage and we'll concatenate and say pd dot concatenate total or percent. This is the total column, this is the percentage column, and x is equal to 1 keys. So key will be total and percentage of the missing value. So when we'll run this, we'll see this missing value is not there in the data. So there we can assume that there are no missing value in the data, and this is how we'll do the missing value treatment. Then in the next video we'll discuss how to scale the data.